Assalamu alaikum students. We're delighted that we are about to culminate Vijaynagar Kingdom in day or two. Today we'll have one of the most important topics to discuss. The topic to be discussed today is cultural aspect of the Vijayanagar Empire. When I say important, I say it important on two aspects. One is the preliminary aspect. Other, the more important aspect, that's means aspect. Since lines are clearly mentioned in your syllabus that the cultural questions from the culture can be asked. So you have to expect a question from culture. And Vijayanagar culture, is very you have to expect a question. Such is the cultural theme. A question has to be asked. Even NCRT has illustrated, elaborated this cultural context of Vijayanagar Empire in a great detail. And third aspect which you have to understand when you are going to write mains in coming time or in next examination or in next session, you will see the questions from the cultural portion are the ones which are very tricky and very difficult to handle. You do not get a lot of you do not have a lot of scope there to write a brilliant answer because the questions can be asked in a very tricky manner. So, to keep that ambivalence away and to further concentrate and to further critically evaluate ourselves on this cultural aspect as well, we shall make a habit, and we should rather make a habit to read the culture the way it is asked in examination. One more important thing you will have to note down is most of the questions from the culture are asked in 10 mark section. Means 150 words. You will have, and how those 150 words will be asked, how the question from this section will be asked, it can be asked in various ways, either to make a comparison or evaluate different phases of cultural introductions or cultural settings of India and make a critical evaluation among different kingdoms and different empires. Other way would be that the question of more integrate nature, more knowledge-based or theme-based question can be asked from this. And third aspect of the same this cultural portion can be a question from your thought process, your analysis. How do you think of it based on your understanding? A question can come out from there as well. So they can check your understanding of the same portion of culture. So we have to make a habit of dealing with these kind of questions like they are asked in mains. And from that mains perspective, we'll have to find our way to at least what we can say that to at least get the information, to absorb the information, to assimilate the information that can be asked in your preliminary examination. So cultural aspect, I believe, should be also always read in a mains perspective because mains is very important. It's a tricky part of the your GS1 paper, and you will have to find way to answer a preliminary examination while you study for mains cultural part. So let's discuss. Do you understand what I wanted to say? We'll pose ourselves a question. I will be dealing this cultural aspect under 2 to 3 headings. First, we'll go with a general theme of understanding the culture of India. Then we'll go opinion based. Then we'll try to form an opinion and diversify our knowledge of culture so that we can use it in our mains examination. First, we'll just try to understand the theme of Vijayanagar culture. ठीक?
Before we start, do you know the capital of Vijaynagar Kingdom? Hampi. And Hampi is a UNESCO World Heritage Site. You know, till 1800, we had no idea about this Hampi. It was only Colonial Mackenzie, the East India Company engineer, that started excavations at this area, in this area, and found in its ruins the diversity, the rich cultural diversity of Vijayanagar Empire that prevailed. One, if we have to analyze where do we get this cultural information about Vijayanagar, one would be excavation, archaeological evidence from Hampi. Then, on other part, we'll have to see to other sources as well. Most of those sources come from the remaining part, that's excavation, archaeological evidences, and literary evidences, or the evidences from those that have been reflected in the books or in the sayings of foreign travelers. We get those information from there. I'll be quoting foreign travelers such that we authenticate, we legitimize our knowledge. ठीक? Go what Hampi? This was a question once asked. Then there was a times when simple questions were asked from general studies paper of Jammu Kashmir Combined Computer Examination, and when one of the examination, I believe around 2015 or 2014, this question was asked. Vijayanagar, the capital of Vijayanagar Kingdom was Hampi, and by then almost many students did not know, but today almost everybody knows. With this sort of question, you do not have to expect now what is the capital of Vijayanagar Kingdom. But what knowledge we get from Hampi about Vijayanagar, that's important. That's a question that can be asked now. And you can be given various features, and you can be asked to identify the place. You please go through this Hampi once, get a broad idea from there what is actually present here. Because in one of the Hampi temples we have a culture, there's chariot. There are few chariot temples in India. One belongs to Hampi. Why is it as a UNESCO World Heritage Site? What are the various specifications? Why is it important that it had been included in UNESCO World Heritage Site? I would request you to go through this part. So that you can get a knowledge about Hampi. ठीक? Now, we'll ask ourselves a question. First question. Discuss how Vijayanagar Kingdom became a cult. Became cultural capital of South. Simple question means if you have a knowledge about this cultural aspect, you can deal with this question very easily. ठीक? Now, let's go to how. Means this question points out that we have to understand various cultural aspects of Vijayanagar Kingdom. Then we can say how did it become the cultural capital. If we analyze various cultural aspects, we analyze on various distinctive features. ठीक? One would be architecture. Other would be art forms.
Third would be literature. And we are already done with this part. We are not going to repeat literature here, but we are done with this. So our main focus would be architecture and art forms. And we'll discuss these two aspects of the architectural part in various ways, so that different types of questions, if posed, can be answered in a better manner. Take now, is it what we are going to study? It should be okay by now, huh? Now, since it's very, I'm trying to build as many as headings as I can, सब headings, because उससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है, आपको अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाती है, उससे आपकी आंसर राइटिंग में एक फॉर्मेट पहले से ही मौजूद रहता है. ठीक, अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, किसकी बात करें? आर्किटेक्चर की. तो आर्किटेक्चर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे. वन वुड बी सेक्युलर आर्किटेक्चर, इससे आपका क्वेश्चन अच्छा बनेगा, इससे आपका क्वेश्चन प्रेजेंटेबल बनेगा. ठीक है, हाँ, और आपको पहले ही फ्रेमवर्क पता चलता है कि आंसर लिखना कैसे है. सेक्युलर, अदर वुड बी रिलीजियस आर्किटेक्चर. यू वोंट फाइंड दिस क्लासिफिकेशन ऑफन कि ऐसे पहले दिखाया होगा. फिर सेक्युलर को हम वापस किस हिस्से में तब्दील करेंगे? रॉयल सेंटर, रॉयल प्लस डोमेस्टिक. ठीक, हाँ, और डोमेस्टिक को फिर हम और हिस्से करेंगे. डिफेंस, मैं बताऊंगा ना कैसे. आपको अभी आप फिलहाल इसके दौरान जाओ कि why we can say it's a defense architecture. I am going to explain it, don't worry. ठीक, हाँ. Now, before we go into various features of various architectural part, let me tell you one thing. Let me give you a statement that was given by Abdul Razak, Persian traveler. तो ठीक है, मैं इसको थोड़ा रब करूँगा. हाँ, बराबर आप. ये आपको इन हेडिंग्स में हमें इसको पढ़ना है. ये समझा? अब्दुल रज़ाक का कहना है what is it? He was greatly impressed. What? Greatly impressed by fortifications
and mentions 7 layers of fortifications. How many? 7 lines of forts. These forts, ये मैं आपको क्यों लिखा रहा हूं? बिकॉज इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा कि आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर कैसे था. These forts encircled not only city but also agri hinterlands and forests. ठीक, देखिए इसका क्या मतलब है. अगर ये टेरिटरी हो रही है स्टार्ट, विजयनगर किंगडम की, आप मान के चलिए कि ये टेरिटरी हिल टेरेन से स्टार्ट. पहला लाइन ऑफ डिफेंस खुद हिल टेरेन है. आपने बोला डिफेंस आर्किटेक्चर, यहां से आप समझिए ये फोर्ट्स ही डिफेंस आर्किटेक्चर का आपको आइडिया देते हैं कि ये किस तरह बनाया गया था. आपने बताओ कैसे. यहां से पहला लेयर था इसका, ऐसे दो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. सिटी को ऐसे प्लान किया गया था कि डिफरेंट फोर्स फिर कैसे बनाया गया था. इट्स नॉट कि ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे बनाया गया था. यहां आप मान के चलो ये रॉयल सेंटर था. ये वाला हिस्सा आप मान के चलो ये अर्बन, ये मान के चलो ये भी जो एग्रीकल्चर फील्ड्स, ऑर्चर्ड्स, ऐसे ही मतलब डिफरेंट सब चीजों को क्या किया गया था, फोर्टिफाई किया था. अब डिफेंस कैसे है, आपका सवाल था डिफेंस कैसे है. आप जब हमने विजयनगर और बहमानी किंगडम्स की फाइट देखी, व्हाट दे ऑफन यूज्ड टू डू, चूंकि इन फोर्टिफिकेशन वो ऑफन अटैक करते थे एग्रीकल्चरल फील्ड्स को और इनकी ग्रेनरीज को. क्यों? ताकि वो इनकी जो कंजप्शन सब्सिस्टेंस है उसी को पहले खत्म करें, ताकि वो इनको जैसे इनकी जो जिसके लिए जो अगर इनका फूड ही पहले खत्म हो जाएगा, इनको क्या ताकत रहेगी फिर आगे लड़ने. इनकी सब्सिस्टेंस को ही अटैक किया जाता है, इनके एग्रीकल्चर को ही अटैक किया जाता था. तो उस हिसाब से हम ये कह सकते थे कि these forts acted as a इसलिए इनको फोर्टिफाई करना पड़ा क्योंकि these forts acted as a defense. तो विजयनगर किंगडम को अपनी लाइन को एग्रीकल्चर फील्ड्स को प्रोटेक्ट करने के, ऑर्चर्ड्स ग्रेनरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इन फोर्ट्स का सहारा लेना पड़ा. ठीक. और अब आया समझ, अब यह आया समझ कि पैटर्न कैसे था. अब हम पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से क्या क्या इसमें मेन फीचर्स थे. फिर आप खुद उसमें जोड़ सकते हो कि रिलीजियस आर्किटेक्चर कौन है, सिविल आर्किटेक्चर क्या होता है. ठीक है. वो मत आप मुझे दिखाने की जरूरत है, वो आप खुद लिख सकते हो फीचर्स में, या जब आप अच्छे से ये प्रिपेयर करोगे आप खुद आपको पता चलेगा. मैंने आपको एक आइडिया दिया कि आंसर का पैटर्न आपको किस तरीके से डेवलप करना है. इन फोर्ट्स में एक खास बात थी, वो भी आप प्रिलिमिनरी के लिए याद रख सकते हैं. ठीक है. ये जो फोर्ट्स है ना,
no mortar was employed anywhere in their construction. सर फिर ये कैसे स्टेबल रहते थे? ये भी सवाल है ना, जब सीमेंटिंग मटेरियल नहीं है, बाइंडिंग मटेरियल ही नहीं है, तो ये कैसे रहते थे? क्या स्टेबल कैसे रहते? ठीक, तो इन पत्थरों को या बिल्डिंग मटेरियल को या ब्रिक्स को जो एम्प्लॉय किया है वो वेज शेप्ड थी। क्या थी? तो वो वेज शेप्ड आपने देखा होगा, वो वेज शेप्ड उनको उन्हीं वेजेस उन्हीं ग्रूव्स में फिट किया जाता था और फिर वो स्टेबल रहती। आया समझ? वेज शेप्ड कहते ब्रिक्स, स्टोन्स, व्हाटएवर दे यूज्ड। और इन्हीं फोर्ट्स में क्या प्रेजेंट हुआ करते थे? इन फोर्ट्स को ट्रेसपास करने के लिए कुछ अहम चीजें होनी, इनको वेल गार्डेड। हम अभी फोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्ट्स आप किस में रखेंगे? डिफेंस आर्किटेक्चर में। ये तो डिस्क्रिप्शन है ना, अब्दुल रज़ाक तो ऑब्वियसली वही कह रहा है, ठीक है ना? तो अब हमें ये अगर हमने पढ़ा किस में आप लिखेंगे? सिविल के डिफेंस आर्किटेक्चर में, ठीक है? और वहां इन्हीं फोर्ट्स में वेल गार्डेड गेटवेज हुआ करते थे। गेट्स क्या हुआ करते थे? क्या? गेट्स which were often connected with roads and linked to the city, which linked via various roads with city। ठीक है? यहां अब और एक सवाल इंपॉर्टेंट, ये इसको हमें थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव में भी पढ़ना है और प्रिलिमिनरी के पर्सपेक्टिव में भी पढ़ना है, जो मैं अभी स्टेटमेंट लिखने वाला हूं। ये जो गेटवेज थे ना, they were distinctive, they were having distinctive arc features। और आर्क और डोम फीचर किसका था? मीन्स ये रिप्रेजेंट करता था इंडो इस्लामिक और डोम फीचर। और ये क्या कर रहा था? रिफ्लेक्ट इंडो इस्लामिक स्टाइल। मीन्स अगर हम कहेंगे कि इनका जो यहाँ से हमें ये मान के चलना है कि हम ये absolute statement, we cannot use an absolute statement which says that they had a very distinctive and unique and they had not borrowed anything from other kingdoms or empire. This would be untrue. Rather, we can say in their gateways they were having dome, Indo-Islamic, like an Indo-Islamic setup, arc and dome structures।
ठीक, आया समझ? ये क्या हो गया? अभी हम सेक्युलर आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, रिलीजियस हमने कुछ पढ़ा? अब हम किसकी बात करेंगे? रॉयल सेंटर की। किसकी बात करेंगे? रॉयल सेंटर साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ सिटी में था। किसमें? ठीक, कहां? साउथ वेस्ट पार्ट में, ठीक है। और यहां जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि लगभग यहां 30 बिल्डिंग्स एंड 60 टेम्पल्स का जिक्र किया गया है। कहां पाए गए? ठीक है। और इन्हीं रॉयल सेंटर्स में क्या हुआ करता था? रॉयल आप यहां थोड़ा बहुत ध्यान देना। रॉयल पैलेस, रॉयल सेंटर में, रॉयल सेंटर ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ कितने टेम्पल, 60 टेम्पल्स का जिक्र, आइडेंटिफिकेशन हमें हुई है। जिन मीन्स अगर हम इसको ये मान के चले कि ये सैक्रेड पार्ट और जो डोमेस्टिक पार्ट था, मीन्स टेम्पल्स ज्यादातर कहाँ पाए गए? यहाँ। मीन्स ये सैक्रेड कॉम्प्लेक्स, सैक्रेड पार्ट जो था, सैक्रेड कॉम्प्लेक्स, वो ज्यादातर कहाँ? इसी एरिया में था। ठीक है। अर्बन कोर फिर अलग था। अर्बन कोर की हमने बात पहले थोड़ी बहुत डिस्कस की। और जब रॉयल पैलेस में हमें कुछ सेक्युलर बिल्डिंग्स मिलती है और उनका हम जिक्र करेंगे। क्या करेंगे? सेक्युलर बिल्डिंग्स की, रॉयल सेंटर में ना। ठीक है। अब क्या क्या मिलते हैं? पहले रॉयल पैलेस, ठीक। अगर हम रॉयल पैलेस की बात करेंगे, ये सुपर स्ट्रक्चर्स थे। क्या थे? बड़े, मेड अप ऑफ पेरिशेबल मटेरियल। और अनलाइक जो सैक्रेड पार्ट था, रिलीजियस आर्किटेक्चर का, उसको ज्यादातर बड़े ही कंसोलिडेटेड मटेरियल के साथ बनाया जाए जो लॉन्ग लास्टिंग हो। ठीक। और ये रॉयल पैलेसेस क्या थे? बहुत बड़े। और रॉयल सेंटर में हमें जो डोमेस्टिक सेक्युलर आर्किटेक्चर मिलता है या अर्बन कोर में, ठीक है, या आप मानो आप रॉयल सेंटर में, ठीक है, ऑडियंस हॉल, महावनामी डिब्बा, मे भी कल को आपको सवाल पूछे कि विजयनगर किंगडम इज ओनली नोन फॉर इट्स रिलीजियस आर्किटेक्चर,
it does not have an evidence of secular architecture on large scale. आप लोग नहीं, we have a secular as well as religious architecture, or you have your answer should be replete with examples. ठीक है. अब ये audience hall क्या काम करता था, वहाँ वाले डिब्बा क्या काम करता था. ये हाई प्लेटफॉर्म पे ये हाई प्लेटफॉर्म पे हुआ करता था जहां लोग किसको मिलने आते थे, ठीक है. हाँ, और यहाँ कौन से पिलर्स पाए विद यहाँ कौन से पिलर्स पाए जाते थे. हाँ, ठीक है. महानवी डिब्बा ये सिटी के हाईएस्ट पॉइंट पे था. कहाँ, और इसको ज्यादातर आजकल रिलेट किया जाता था कि ये महानवी नाम है, जो महानवमी फेस्टिवल है ना, महानवमी, उसके साथ रिलेट किया, इसको लिंक किया जाता था. बट एक्चुअल एग्जैक्ट रिलेशनशिप वी डू नॉट नो. ये सिटी के किस पॉइंट पे था, हाईएस्ट पॉइंट के साथ. और ये ज्यादातर इसके जो नियर बाय थी ना, इसके नियर बाय में क्या थी, नियर बाय में थी इसके वाटर टैंक, ह्यूज वाटर टैंक. ठीक है. और क्या पाया जाता था, ये प्लेटफॉर्म, आप जब इसकी पिक्टोरियल व्यू देखोगे ना, अब रेज्ड प्लेटफॉर्म है, ऐसे बनाया गया. ठीक है. तो इसका क्या रोल था अभी वो एसर्टेन नहीं हुआ. अब आमतौर पर आपको कोई नहीं पढ़ाएगा सेक्युलर आर्किटेक्चर ऑफ, बिकॉज इट इज नोन फॉर रिलीजियस आर्किटेक्चर. सेक्युलर आर्किटेक्चर ज्यादातर नहीं पढ़ाया जाता है. बट यू शुड नेवर फील, योर नॉलेज शुड बी कंप्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक. और क्या पाया जाता है सेक्युलर में, लोटस महल. ठीक है. ये इसी रॉयल सेंटर के आसपास से दिखा गया. ठीक है. ये लोटस महल, इसको ब्रिटिश ट्रैवलर्स ने नाम दिया है. कितने, और लगता है कि ये फंक्शन करता था काउंसिल ऑफ काउंसिल चैम्बर. ठीक. और क्या यहां था, क्वींस बाथ. जैसे हड़प्पा में ग्रेट बाथ थी ना, हाँ, इट एक्टेड लाइक इज अ ग्रेट बाथ. हाँ, और यहां पे एलिफेंट स्टेबल भी पाया जा गया है. आया समझ. ये हम किसकी बात कर रहे हैं, रॉयल सेंटर में क्या क्या हमने देखा. अब हम थोड़ा अर्बन कोर की बात करेंगे. और दिस वुड बी परहैप्स अर्बन कोर. मुझे नहीं लगता है कि हमें आज रिलीजियस आर्किटेक्चर उठाना चाहिए, देयर वी कैन नॉट फॉर्म अ लिंक फॉर अर्बन. तो रिलीजियस आर्किटेक्चर हमें अगर एक ज़्यादा ही लेक्चर लगेगा किसमें, बट वी शुड नॉट फील कि हमने थोड़ा इनजस्टिस किया. ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. और ऐसे आपको कोई नहीं, मैं आपको यहाँ से आप कहीं से भी देख लो, कहीं भी पढ़ो, आप किस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ो, वो आपको रिलीजियस आर्किटेक्चर समझाएगा, सेक्युलर आर्किटेक्चर. बट ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस इज चेंजिंग. यू नेवर नो व्हाट कैन बी आस्क्ड. दे कैन गिव एन एग्जांपल, दिस बिलोंग टू विच, दिस बिलोंग टू विच. तो आपको उस वक्त विजयनगर सीधे याद पड़ना चाहिए कि मैंने तो विजयनगर आर्किटेक्चर में पढ़ा. महानवमी डिब्बा, लोटस महल, हाँ, ये कहाँ मैंने देखे, विजयनगर दिना में. फिर इनकी मेंस में आप सेक्युलर, अगर इसके अगर वहां से पर्टिकुलर क्वेश्चन पड़ेगी, यू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सेक्युलर आर्किटेक्चर ड्यूरिंग विजयनगर दिना, तो वहां आपको पता होनी चाहिए कि ये मुझे एग्जाम, क्योंकि जितनी एग्जाम्पल्स आपके पेपर में है उतना आपका पेपर स्ट्रॉन्ग. ठीक. अब हम अर्बन कोर की डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं. हाँ,
अगर ये रॉयल सेंटर था तो अर्बन कोर कौन था? ठीक है, देखो अर्बन कोर में क्या पाया जाता है? मुस्लिम रेजिडेंशियल क्वार्टर्स। तो इसलिए मैंने आपको कल ही बताया कि चूंकि मुस्लिम्स were employed in the administrative setup during Vijaynagar kingdom, we cannot say that it was only a citadel of Hindu. So you have another point to justify your answer. ठीक? Another point. मैंने बोला आपको अपनी knowledge connect करनी आनी चाहिए. Then you are done with your preparation. और क्या मिला यहाँ? यहाँ और चाइनीज पोर्सिलीन मिला. अगर चाइनीज पोर्सिलीन मिला तो हमें यहाँ से ये साबित होता है कि ये अर्बन सेंटर जो ना ये ट्रेड लिंक्स है कि नहीं? मुझे ट्रेड सेंटर का भी काम कर रहा है. और यहाँ हमें टेम्पल्स भी मिले, टेम्पल्स एंड मॉस्क्स. क्या मिले? मीन्स यहाँ हमें सेक्युलरिज्म, टॉलरेंस, अकोमोडेशन का वापस और एग्जाम्पल मिले. और जो इनकी आर्क थी ना मॉस्क्स की, it resembled arc resembled mandapas found in temples of Hampi. Means not arc, they resembled. These mosques resembled like mandapas of or mandapas found in mosques in general. In Vijaynagar, na? Mosques in general resemble in temples. ठीक. और हमें बारबोसा कहता है, उसकी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बारबोसा क्या कहता है हमें कि जो ऑर्डिनरी पीपल के होम थे ना, दे वर वेल बिल्ड. हाउसेस, दो thatched मीन्स माड़ के बने थे और उनको थैच किया गया था. ठीक है, हाँ, बट वेल बिल्ड, साफ सुथरे और नीट थे, अच्छे बनाए गए, स्टेबल बनाए गए थे, स्ट्रॉन्ग बनाए गए. बट ठीक. और साथ ही में यहाँ क्या पाए जाते हैं? यहाँ वाटर टैंक्स, वेल्स और टेम्पल टैंक्स भी पाए जाते हैं. कहाँ? इस अर्बन कोर में. इन वाटर टैंक्स और टेम्पल को या तो डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए यूज किया गया होता या इरिगेशन के लिए. This is what we have learned about architecture of Vijaynagar kingdom, but we have today our focus was on secular architecture, be it domestic or royal. We're not concerned with that. ठीक. But what we have not touched even a single part from temple architecture. That we shall do on Monday, and then we shall ask ourselves various questions on Monday regarding how the questions from this section can be asked. I believe that आज आपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा होगा because this is very important for your examination. हाँ, तो this is all. Thank you so much.